Welcome, dear students. Today's lecture is about cleaner production assessment methodology. इससे पहले हमने जो अभी तक दो लेक्चर पढ़े हैं उसमें हमारा जो फोकस था, पहले लेक्चर में तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था क्लीनर प्रोडक्शन का, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का, वो डिस्कस किया। दूसरा जो था उसमें हमने क्लीनर प्रोडक्शन को एज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोर्स जो है वो डिस्कस किया। बेसिकली क्लीनर प्रोडक्शन जो है ना ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये जो है इट इज़ नॉट एन एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट। ये उस कन्वेंशनल मेथड से किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, ये भी हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में देखा। एंड इन आवर कमिंग लेक्चर्स एंड इन टुडेज लेक्चर हम देखेंगे कि क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो हम किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है इट इज़ ओनली फोकस्ड कि हम कौन सी जो मेथडोलॉजीज हैं वो अडॉप्ट करते हैं। What is the sequence of procedure? हमारा जो मेथडोलॉजी है वो किन चीज़ों के ऊपर कंस्टिट्यूट करती है। So that's why today's lecture will be basically describing all those ingredients and all those components which are related with the implementation process. कि हमने क्लीनर प्रोडक्शन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर किस तरह से और इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ क्लीनर प्रोडक्शन डिस्क्राइब्स itself to be a continuous implementation process. It is a continuous improvement process. पहले जो टेक्निक्स यूज करते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, उसमें जो हमारी अप्रोच है दैट इज we are only dealing with the final waste which we have created. While cleaner production is a combination of adaptation of different new technology, new methods, as well as with adaptation of reduction in the finances. So एक ही टाइम पे हम दो चीजें टारगेट करते हैं, फाइनेंसेस एज वेल एज इन्वायरमेंट. So this is the basic spirit of our production approach. और वो किस तरह से हमने आगे यूज करनी है उसके लिए भी हम मेथोडोलॉजी देखते हैं. So start. What is cleaner production? क्या है? What is cleaner production? Pollution control से जब हम मॉडिफाई करते हैं अपने अप्रोच को, और how cleaner production reacts, it is a treatment approach. Pollution control, इसमें अगेन हमारे पास जितने भी मेथड्स हैं, pollution once have been created, once it has been generated, now we are focusing on its treatment. This is called pollution control. So इसको हम react and treat approach कहते हैं. So we have already took something, we have already acted upon something, and now we are going to apply the solution. While we have a proactive approach as well. अब proactive का मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन के क्रिएट होने से पहले उसको सॉल्व आउट. So we are actually focusing on prevention method in anticipation. Anticipation means something to be predicted. So once we are predicting कि इसके अंदर we have the possibility कि इसके अंदर जो level of pollution है, level of contaminant concentrations है वो higher हो रहा है. So we need some alternative approach, और वो alternative approach जो है वो it should be based on some simplified solution. एक तो ये है कि toxicity level को reduce कीजिए. So how we can do that? We can do that by so many processes. So there's a complete loop, a circular closed loop which will be described in our coming slides कि हम किस तरह से जो है proactive approach इसको adopt कर सकते हैं within an organization or
इंडस्ट्री, और फिर उसके बाद उस प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू हम अपने जो पोल्यूशन लेवल है, पोल्यूशन लोड है, उनको किस तरह से रिड्यूस कर पा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हम अपने फाइनेंसेस को किस तरह से रिड्यूस कर पा रहे हैं. सो बोथ मूव इन पैरेलल, साइड बाय साइड, और दोनों ही हमारा जो मेन फोकस है वो रहेगा. This is the spirit of clean production. Let's define what is cleaner production assessment. Cleaner production assessment is one of the specific cleaner production diagnostic tools. This is a systematic procedure for the identification and evaluation of cleaner production options for the companies that are launching a cleaner production project. So, this is a systematic procedure, और इसका काम क्या है? आइडेंटिफाई करना और इवेलुएट करना. First of all, we will identify the areas where we can apply CP, and then we will evaluate how much successful rate we can achieve, how much reduction in pollution we can. This is called assessment, and different options can take place in different forms. So we will have a series of options. We have options, and all those options will be explored, and we will select the most appropriate and economical and beneficial. So basically, this is our assessment, and this assessment tool is actually going to give us the ideas and options where and how production can be adopted, where and how. So the areas which are capable of adopting cleaner production. For example, if we are having some uh, in an industry, if you take an example, uh, there will be some input material entry, there will be some output material, there will be a processing component, as we discussed in our first lecture. There are different components जिसके अंदर हम ये modifications हैं वो मजीद in detail देखें तो actually we are having about 4 to 5 components, जिसमें input material भी था, जिसमें processes थे, जिसमें operational and maintenance था, जिसमें design था, जिसमें output था. तो ये जो है वो हमारे components हैं जिसके अंदर हम modification कर सकते हैं. So what we are going to do in this thing, in this matter, आप observe करें that first of all it is a systematic procedure जिसमें हमने areas को identify करना है. So those areas will be basically covering all the possibilities. हो सकता है इनपुट मटेरियल में हम कुछ चीज़ मॉडिफाई कर सकें, हो सकता है डिजाइनिंग जो है वो ज़्यादा यूजफुल हो. सो इट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन, आइडेंटिफाई एंड these are our two targets to achieve under the heading of this CP assessment. Many organizations have produced manuals describing cleaner production assessment methodologies with the same underlying strategies. तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने सिस्टम को स्टडी करते हुए they have developed cleaner production approaches जिसमें अडॉप्ट करने जा रहे हैं. So this is an overview कि जो हमारी cleaner production है, this is an overview, और इसमें cleaner production assessment method जो है वो डिस्कस किया गया. Recognize need for cleaner production. First of all, we should acknowledge there is a room to modify our existing system, और किस तरह से हम modify करने जा रहे हैं उसके लिए we need to have a planning and organization, pre-assessment, assessment, feasibility, implementation, and then results of that
assessment. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास this one continuation of the cleaner production program. It is a complete closed loop. अभी हम अगली स्लाइड्स के अंदर इसी सिस्टम को closed loop form में डिस्कस, because basically every step is interconnected. Every step is interconnected. And how these are interconnected, ये अभी हम next slide के अंदर हम इसको देखेंगे. And the most important हमने बात की, it is all about the continuation. This is our this process. इसमें वही चीजें हैं दोबारा से, और इसमें अगर आप देखें तो we have a cleaner planning or an organization, we have pre-assessment, we have assessment, feasibility analysis and implementation and continuation. इसमें मज़ीद कौन-कौन सी चीज़ें ऐड अप हो रही हैं. First of all, when we are talking about planning and organization, उसमें जो acknowledgement है और जो support है from the top management, top leadership, वो सबसे important है, because that leadership is actually going to define the objectives of cleaner production. So वो define करते हैं कि what will be our targets about cleaner production, because हमारे दो इसमें options हैं, दो चीज़ें हमने इसमें अचीव करनी है. एक तो इकोनॉमिकली हमने इम्प्रूव करना है, एंड सेकेंडली हमने इन्वायरमेंटली इसमें इम्प्रूव करना है. तो उसके अंदर जो बेसिक उसमें जो स्कोप है, दैट विल बी that is the responsibility of the top management to define. उसके अंदर वो एक विजन प्रोवाइड करते हैं कि up to what level they are interested to achieve this CP. ये जो क्लीनर प्रोडक्शन टारगेट्स हैं वो उनका क्या लेवल है, किस लेवल तक उन्होंने अचीव करना है. सो दिस विल बी डिफाइनिंग आवर मेन थीम, मेन एम. उसके बाद जो टारगेट्स हैं वो डिफाइन किए जाते हैं, और उसके बाद जो है एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट है. लास्ट लेक्चर में जब हमने कंपैरिजन किया कन्वेंशनल एंड ऑफ ट्रीटमेंट मेथड्स का और सीपी का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप अगर याद कर सकें वो ये था कि हमारा जो क्लीनर प्रोडक्शन मेथड है, इट इज supposed to be implemented by every person working in that organization, and it is all about the interconnected effort. So it is not the duty of only one person, one skilled person or one technically competent person to implement CP. It is a teamwork. Every person working in the organization is responsible for implementing these strategies. सो ये बेसिक एक डिफरेंस हमने पढ़ा था उसके अंदर कि सीपी जो है उसमें हर एम्प्लॉय ने इन्वॉल्वमेंट करनी है और इक्वली उसका शेयर है इन द इम्प्लीमेंटेशन, जबकि जो हमारी कन्वेंशनल एंड ऑफ पाइप ट्रीटमेंट्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ जो स्किल्ड एक्सपर्ट हैं वो रिक्वायर्ड हैं. उसके लिए वी नीड सम टेक्निकल असिस्टेंस, और वो हमें कोई भी जो एक्सपर्ट है वो प्रोवाइड करें डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग इन हैविंग अ प्रोजेक्ट ऑफ एंड सारे का सारा जो है वो एक ऐसी टीम होगी जो कि स्किल्ड लेबर के कंस्टिट्यूट करेगी. बट इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन आवर प्रोडक्शन. इसमें हमारा हर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इक्वली रोल प्ले करता है. टीम होगी जो कि इसको लीड करेगी, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी, जो कि टारगेट्स को और जो कि फिर डेडलाइंस को डिफाइन करेगी कि until when we are going to any particular target. Then barriers and solutions to the process जो है आइडेंटिफाई करने हैं by this team.
decide the focus of the CPA. सो ये वो चीज़ें थी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है उसने हमें गाइड करना है कि व्हाट ऑफ दी आवर एम, हमने किस लेवल तक इसको अचीव करना है और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है. इट विल बी ऑल डिफाइंड बाय द इंडस्ट्री टॉप मैनेजमेंट. जो बैरियर्स की बात है दैट इज अबाउट दोज hindrances जो कि एग्जिस्ट करते हैं. These hindrances can be related to the land acquisition, land availability, about the area covered by the organization. It can link with the resources available by the organization. So इस तरह के जो barriers हैं वो भी प्री डिफाइंड होंगे ताकि उनको कंसिडर करते हुए जो सॉल्यूशंस हैं वो प्रोवाइड किए जाएं. So this is all previously conducted homework और implementation of the. और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है असेसमेंट. वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज कि कहाँ कहाँ पे हम इसको. so now we are moving one step ahead. उसमें प्री असेसमेंट इसमें कंपाइल एंड प्रिपेयर बेसिक इंफॉर्मेशन. एक्चुअली ये सारी डिटेल जो है ना वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में भी पढ़ेंगे. so we will just quickly have an overview. Compile and prepare basic information, conduct a walkthrough, prepare an eco map, and then prepare a preliminary material and energy balance. Then we will be having some feasibility analysis. जिसमें options हैं. Screen means to sort out things कि जो हमारे options available हैं उसमें कौन सा most suitable है और जो non suitable होंगे उनको हम sort out कर देंगे. Generate options, conduct cost diagnosis, and then prepare a detailed material and energy balance. And then in the implementation continuation phase we will be having to select feasible options and conduct economic and environmental evaluation. Then finally we will be having this sustain cleaner production assessment in the implementation phase and prepare a cleaner production plan. CPA versus EMS. So एक आप जानते होंगे term environmental management system, and then we have a cleaner production assessment. अगर आप इन दोनों की working methodology को देखें तो both are quite relevant. So how they differentiate? A cleaner production assessment and an environmental management system are comparable, compatible. While cleaner production projects have a technical orientation, an environmental management system focuses on setting a management framework. अगर आप observe करें तो this is the major difference. EMS जो है वो typically relate करता है management, while CPA relate करता है with the technical. We need to revise and modify the designing parameters, designing procedures, outcome of the product. ये सारी चीजें जो डिजाइनिंग से रिलेटेड है वो हमने चेंज करनी है. सो ऑल दीज आर द टेक्निकल सॉल्यूशंस. मैनेजमेंट सॉरी जो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस हमारा यूनिट है उसके अंदर जितनी भी टेक्निकल मॉडिफिकेशंस पॉसिबल है या टेक्निकल solutions possible हैं वो हमने adopt करने हैं. And the target is again the same, to improve the environmental conditions, to reduce the pollution load. And then and again जो हमारे शुरू के जो phases हैं हमारा input material involve हो रहा है, and that input material again can be modified by technical grounds. हम कोई technically ऐसा अल्टरनेटिव टू दैट प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं, इनपुट मटेरियल का अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आगे जाके लेस टॉक्सिक हो, टॉक्सिसिटी लेवल जो
हमारा वेस्ट वाटर के अंदर डेवलप होता है ड्यू टू द इनपुट मटेरियल वो रिड्यूस हो जाए। इज द क्लीनर प्रोडक्शन अप्रोच जिसमें कि हम टेक्निकली इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो इसमें मैनेजमेंट भी एंड एट द सेम टाइम टेक्निकल सोल्यूशन भी। environmental management system जो है that is purely based on the management of the whole organization and different components। ये अगर आप देखें तो methodologies to undertake cleaner production assessment है। इसमें आप देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो ओल्ड हमारे पास है डॉक्यूमेंट वो USEPA 1992 में प्रिपेयर हुआ। इट वाज अबाउट फैसिलिटी पोल्यूशन प्रिवेंशन गाइड जिसमें जो मेथोडोलॉजी थी इट वाज डेवलपमेंट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन प्रोग्राम। प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है वो एक मेथोडोलॉजी का मेन पार्ट ऑफर्ड बाय डच मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट एंड एमिशन। फिर यही चार जो चीज़ें अभी हमने डिस्कस की वो थी। देन वी हैव यूनेप यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो कि जिसमें ऑडिट एंड रिडक्शन में प्रिपेयर हुआ फॉर इंडस्ट्रियल एमिशन एंड वेस्ट। और इसकी जो मेथोडोलॉजी है उसमें प्री असेसमेंट मटेरियल बैलेंस एंड सिंथेसिस जो है वो फोकस। एंड देन इन यूनिप ये जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं और अभी करने जा रहे हैं दिस इज अबाउट द UN यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इन 1996 उन्होंने गाइडेंस मटेरियल प्रोवाइड किया फॉर यूनेप यूनिडो नेशनल क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर्स की फॉर्म। सो नो अब हम इन सारे कंपोनेंट्स को जो भी हमने जस्ट ब्रीफली ओवरव्यू किया। पर्टिकुलरली आपने एक हमारा व्हील देखा जिसमें हमने ये सारे कंपोनेंट्स को आपस में वन अनदर। सो उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग क्लीनर प्रोडक्शन। So objective of this phase is to obtain commitment to the project, allocate resources and plan the details of the work to come। So ये इस पूरी जो हमारी फेज है उसके ऑब्जेक्टिव हैं कि सबसे पहले तो कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट हासिल की जाए। और ये कहाँ से लेते हैं अभी हमने बात भी की टॉप मैनेजमेंट से। टॉप मैनेजमेंट ने आपको कमिटमेंट देनी है कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव एंड देन रिसोर्स एलोकेशन एंड प्लानिंग ऑफ द वर्क जो है वो इसका। और अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। obtain management commitment, establish a project team, develop environmental policy objectives targets, plan the cleaner production assessment। प्लीज स्टूडेंट्स इन 4 पॉइंट्स पर एक ओवरव्यू दीजिए कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज पॉइंट्स आर। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक आपस में इंटरलिंक्ड हैं एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर द होल CP इम्प्लीमेंटेशन। सो जितना भी हमारा असेसमेंट का प्रोसीजर है असेसमेंट के कि हम कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी करने जा रहे हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन से एरियाज हैं जहां हम CP अप्लाई कर और द आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ये होने जा रही है एंड देन वी आर विल हाउ वी आर गोइंग टू अडॉप्ट। सो अगेन दिस विल बी हेल्पिंग अस इन असेसमेंट। सो असेसमेंट जो है वो एरियाज की है और फिर फोकस के ऊपर है कि हम इसके अंदर किस किस्म की किस हद तक जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल है तो वो किस हद तक रिवाइज किया जा सकता है। हाउ easy it is to modify it, how easily we can remove or replace this
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है वो हमें प्रोवाइड करे। वो जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक उसका इनिशिएटिव नहीं होगा, उसकी सपोर्ट नहीं होगी, उसने एक आपको विजन जो है वो डिफाइन करना है आपका, उसने एक आपको एम देना है कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग। क्वाइट पॉसिबल कि वो जो एम हमें अवेलेबल हो उसकी कोई अपनी रिपरकशंस हो, कोई उसकी अपनी लिमिटेशंस हो, बट it will be in the uh, uh, in under the guideline of those uh, uh, statements, those mission statements provided by the management. के बाद एक टीम डेवलप होगी जो कि objectives और targets को जो है वो identify करेगी। So in this case we will be exploring the possibilities and then the plan जो है वो develop किया जाएगा। So this is what we have already discussed. Obtain management commitment, analysis and review of present practices, development and evaluation of proposed cleaner production initiatives, and then implementation and maintenance of agreed। ये वो चीज़ें हैं जो कि टॉप मैनेजमेंट की विलिंगनेस के बगैर पॉसिबल नहीं है। Then the objective describe how the company will do this. Then, for example, the objectives could include reduce the consumption of material, minimize the generation um, of waste. Targets are used to monitor if the company is proceeding as planned. An example of target might be a 20% reduction in electricity consumption within 2 years. So, आप इसको लिंक करें analysis and review of present practices. So this will be reviewed by the top management. Development and evaluation of proposed cleaner production initiatives, ये वो possibilities की बात कर रहे हैं। And then implementation and maintenance of agreed changes, कि जो changes suggest किए हैं उनको हम implement और maintain करें, उनको हमने in true practice जो है वो implement करवाना। It should not be only in papers, but it should be actually implemented so that we get the results, required results। जो objective हैं वो define किए जाएंगे। Develop policy, develop environmental policy, objective, target। तो उसमें पहले तो पॉलिसी है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है जो कि टॉप मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करनी है। फिर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि टीम डेवलप करेगी। और फिर ये ऑब्जेक्टिव से लिंक्ड है वो टारगेट है। एग्जांपल देकर आप इसको समझ। एन एग्जांपल ऑफ ए टारगेट might be a 20% reduction in electricity consumption within 2 years। So ये एक टारगेट जो है वो डेवलप किया गया in view of keeping in view of the top management vision and their consent। इस टारगेट को obtain करने के लिए, अचीव करने के लिए now we will methodology कि हमने इस टारगेट को कैसे कैसे, तो we will check कि कहाँ कहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि हम कंजप्शन को, इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन को रिड्यूस। So at the same time when we will be working on the operational and maintenance process, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है इलेक्ट्रिसिटी की, तो सिर्फ उसके अंदर अपने मैनेजमेंट के थ्रू इसको इन्वॉल्व नहीं, इसको अचीव नहीं करना इस टारगेट को, बल्कि आपने कुछ ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट करना है जो कि आपको एक सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करे। तो इट्स
का जो सोर्स है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें आपने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इन्वॉल्व करना है, जो कि ये ओवरऑल आपकी कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की उसको रिड्यूस कर पाएंगे. So that's it is not only about technology, but it is also about new innovative ideas जो कि आपने उस इंडस्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करने जा रहे हैं. Team should draw up a detailed work plan and a times schedule for activities within the production assessment. Responsibilities should be allocated for each task so that staff involved in the project understands clearly what they have to do. अभी आप ऑब्जर्व करें, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट प्री असेसमेंट. सो प्री असेसमेंट में हमारा क्या जो मेन रोल था, ऑब्जेक्टिव जो है प्री असेसमेंट का वो क्या है? इट इज़ टू obtain an overview of the production and environmental aspects of the company. So production processes are best represented by a flow chart showing input, output, and environmental problem area. So कंपनी डिस्क्रिप्शन एंड फ्लो चार्ट जो है इसका एक कंपोनेंट है. इसमें कंपनी प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, पहले क्या प्रोड्यूस होता रहा, how is company organized, what are the main processes, what are the most important input and output. The production line to be studied can best be represented using a detailed process flowchart. Using a flowchart is a key step in the assessment. Basis for material and energy balance which occur later in the assessment. In the process flow chart for a CP assessment, the team should pay particular attention to several activities which are often neglected in traditional process flow chart. These are cleaning, material storage and handling, and sporting operations, cooling, steam, and compressed air production. Equipment maintenance, repair, materials that are not easily recognizable in output streams, which involve catalytic lubricants, byproducts released to the environment as fugitive emissions. These are all the things we will be discussing, we will be identifying in our industry. Flowcharts जो है वो डेवलप किए जाएंगे, and then through flowchart we will try to understand. So this is the process. You have just a view. इसमें input material आ रहा है, process है या output है. The process flow chart is meant to provide an overview and should thus be accompanied by individual input-output sheets for each unit, operation or department in the company. वॉक थ्रू इंस्पेक्शन जो है ये भी प्री असेसमेंट का हिस्सा है. इसमें much of the information needed to fill out the input-output sheets described above may be obtained through walkthrough inspection. All the processes should be assessed, however, time and resource constraints may make it necessary to select the most important aspect or process. So, generate a large quantity of waste and emissions. तो ये वो पॉइंट हैं जो कि फोकस करने हैं थ्रू वाइल walk through inspection. फिर use or produce hazardous chemical and materials, entail a high financial loss, have a numerous obvious cleaner production benefits, or considered to be a problem by everyone involved. Then we move to the assessment. The aim of the assessment phase is to collect data and evaluate the environmental performance and production efficiency of the company. Data collection
can be used to monitor and control overall process efficiency, set targets, and calculate the monthly or yearly indicators. Data collected of operational about operational activities can be used to evaluate the performance of a पहले आपने कलेक्शन ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा करनी है, उसके बाद मटेरियल बैलेंस करनी है, फिर आपने आइडेंटिफाई करनी है क्लीनर प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद रिकॉर्ड एंड सॉर्ट ऑप्शंस हैं सो दैट आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, और कौन सी चीज़ों को आपने इग्नोर करना है which are not required for any kind of modification. It's important to collect data. So for instance, high electricity consumption outside production time indicate leaking compressors or malfunctioning cooling systems. Input worksheets are useful documents. सो कलेक्शन कैसे करनी है क्वांटिटेटिव डाटा की, उसमें कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी. सो प्लीज़ उसमें देखिएगा कि कलेक्शन एंड एवेल्युएशन ऑफ डाटा विल मोस्ट लाइकली रिवील लॉसेस. सो उसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक एग्जांपल, एंड देन लीकिंग कंप्रेसर्स हैं और मेल फंक्शनिंग कूलिंग सिस्टम्स हैं. सो इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट करने का मकसद क्या है कि इनके ऊपर आपने फोकस करना है. सो वी आर आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज व्हिच आर क्रिएटिंग environmental as well as financial issues. So इन दोनों को हमने at the same time address करना है. Developing a worksheet, मटेरियल उसकी वर्कशीट हम डेवलप करने जा रहे हैं ताकि आपको पता हो कितना मटेरियल आपने यूज किया और उसकी आउटकम क्या है. हाउ मच production you obtained by using a specific amount of input. So material balance जो है it is quite a simple version. उसमें आपको जो input material है उसको quantify कीजिए, कितना कंज्यूम हो गया उसके अंदर उसको quantify कीजिए, and then how much was left to leave the system, आउटकम क्या आएगा, सबको हमने इवेल्युएट करना है. This equation material in is equal to material out. उसमें हमारा जो material out है in the form of waste, material out in the form of emission, और साथ ही वो material जो accumulate हो गया, consume हो गया. ये एक अभी आप एक केस स्टडी जो है वो देख रहे हैं जिसमें मटेरियल बैलेंस तैयार किया गया टैनिंग इंडस्ट्री के लिए. सो जो टैनिंग इंडस्ट्री है बेसिकली द लेदर इंडस्ट्री, उसमें हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं फ्रॉम आवर लाइव स्टॉक. इसमें हमारा जितना भी मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ वो आता है, उस स्किन को हम प्रोसेस करते हैं. उसमें उसमें सोपिंग है और अनहेयरिंग है, फ्लैशिंग है, ट्रिमिंग है, एंड देन उसमें टैनिंग प्रोसेस है, और उसके बाद फिर हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है क्रोम लेदर की फॉर्म में. We have hides processed. Hides क्या चीज़ है? It is actually skin parts जो कि स्टॉक से आते हैं हमारे पास. Then we have process water. Then we have rinse water. Then we have total plant water. So this is input material, tanolin, which is 16% chrome.
waste reuse recycling. There are no recycling of water or solids. Expected absorption rate of 10 to 70%. So the rest 30% is wasted. Process outcome क्या है? We are getting chrome leather, we are getting and shavings, and then we have tanning liquor, we have tanning rinse water. Total plant waste water is this. So अगर आप हम कौन सी चीज प्रोसेस के अंदर लेके आ रहे हैं, कौन सी चीज जो है वो प्रोसेस से बाहर जा रही है। सो इस तरह से हम एक वर्क बैलेंस मटेरियल बैलेंस जो है वो क्रिएट करते हैं कि ये वो मटेरियल है जो कि इंडस्ट्री के अंदर फिर इतना उसके अंदर कंज्यूम हो गया और फिर ये वो वाला मटेरियल है जो कि प्रोसेस से आउट हो गया। सो दिस इज द क्रोम लेदर जो कि हमने प्रोड्यूस किया। ये एक हमारा वेस्ट है। ट्रिमिंग्स एंड शेविंग्स आर द वेस्ट, टैनिंग लिक्विड इज द वेस्ट, रिंस वाटर इज द वेस्ट। सो टोटल वेस्ट वाटर हमारा जो ये डेवलप हो जो अपने इनपुट प्रोसेस जो मॉडिफिकेशंस लेके आ सकें, तो वो किस तरह से पॉसिबल। तो ये एक देखें तो और मटेरियल बैलेंस है। वेयर डज द क्रोम गो? सो क्रोमियम इज द मेजर सोर्स यूज करते हैं क्योंकि हमारा असल जो टारगेट है वो जो फ्लैश है उसकी क्वालिटी जो हमारी स्किन है लाइव स्टॉक मटेरियल से जो हमने ऑब्टेन की है उसकी क्वालिटी को हमने इन्हांस करना। सो नॉर्मली वी आर यूजिंग क्रोमियम साल्ट्स जो कि डिफरेंट शेप्स के अंदर नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। बेसिकली to improve the finishing quality of the skin obtained from the livestock। अब वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, आप देखें तो ये वो इनपुट मटेरियल है जो कि सिस्टम के अंदर ऐड हो रहा है and then where it is being used। so chrome leather and chrome pill है, liquor है, rinse water है, ये वो चीजें यहाँ पे यूज हो रही है। तो water of the tanning is this, इसमें क्रोम लिक्वर और दूसरा जो है वो इतना है। where does the water go in the tanning stage? Where do the hides go? So fleshed limed hide, and then we are getting this chromed leather, and then this chromed spill is here. So environmental performance indicators process can be developed from material balance data. This is achieved by dividing the quantity of material input or waste stream by the production over the same period. Performance indicators may be used to identify overconsumption of resources or excessive waste generation by comparing them with those of other companies. So they also help the company track its performance towards targets. So we need to identify कि हर जो हमारा मटेरियल है वो प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, क्या अल्टरनेटिव कहाँ पे उसकी वेस्टेज जो है वो हो रही है, हाउ दैट वेस्टेज कैन बी कंट्रोल्ड। जस्ट एक ओवरव्यू देना मकसद था कि हम जो वेस्ट है सॉरी जो इनपुट मटेरियल है वो कहाँ पे यूज हो रहा है। सो वी नीड टू क्वांटिफाई इतना मटेरियल एंटर हो रहा है, इतना प्रोसेस हो रहा है और इतना एंड प्रोडक्ट आ रहा है। तो बाकी जो बाय प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, जो वेस्ट के साथ जा रहा है वो कितना जा रहा है। सो हाउ वी कैन रिड्यूस आवर लोड ऑन आउटकम प्रोडक्ट्स। क्योंकि अगर हम अपना क्योंकि ये सारे टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ द दिस इनपुट मटेरियल। तो अगर हम यहाँ पे उसकी कंजम्पशन कम करें, यहाँ पे उसका जो वेस्टेज हो रही है वो कम करें एंड देन वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग दिस इनपुट मटेरियल। हो सकता है कि हम जो एंड प्रोडक्ट अचीव कर रहे हैं क्रोम लिक्विड वगैरह
तो वहाँ से हम इसको रिसाइकल करके तो यहाँ पे दोबारा यूज़ करें, ताकि हमारा ओवरऑल जो कंजम्पशन लेवल है टेक्नोलॉजी का वो रिड्यूस हो पाए. So it is all about identifying and evaluating. Identify cleaner production opportunities. So एक ओवरऑल व्यू आपके पास है कि हमारा इनपुट सब्स्टिट्यूशन क्या है, टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन है, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन है, एंड देन recycling है. So all these are the possible options. सो अपने इनपुट मटेरियल के अंदर जो इनपुट सब्स्टिट्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन. फिर दूसरी जो ऑप्शन हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी मॉडिफिकेशन. हम अपने प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिसमें लेस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हो और बेहतर एफिशिएंसी हो, एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर हो. टेक्नोलॉजी के बेटर यूज से हम इन अपने जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनको लिमिटाइज कर सकते हैं. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. देन हम जो रिसाइकलिंग है उसको इन्हांस कर सकते हैं. जैसे अभी हमने बात की कि क्रोमियम जो एंड प्रोडक्ट पे आ रही है, जो कि वेस्ट हो रही है, उसको रिकवर कीजिए और उसको दोबारा से सिस्टम के अंदर लेके आए. So this is one of the possibility. Then by good housekeeping, by improving the operational and maintenance procedures, आप जो क्लीनर प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल कर सकते हैं. ओके, ये वही चीजें लिखी हुई हैं. Then this is how we will be using it. We were talking about these modifications which are possible, and these are the options, opportunities to adopt cleaner production. What are these options? Input substitution, technology modification, product modification, recycling uh, process, and by good housekeeping, we can implement cleaner production opportunity. So we have one more option, which is about record and sort. So where we are going to adopt this record and sort option. It's all about uh, uh, the second level information. Once we define that these are the modifications, this is the component which can be easily modified, and then we should be sorting uh, uh, into those that can be implemented directly and those that require further investigation. So, for example, some of the housekeeping procedures can be adopted right away, and some of the uh, reduction in waste can be done at the same time. But some of the steps will definitely require some further investigation. For example, if we want to work on uh, input material substitution, in that case, it will be requiring some research work, uh, some further investigation that how efficiently we can find the alternative input material. So, in that case, we need to organize the options according to unit operations or process areas or according to input outputs categories, and then identify any mutually interfering options since implementation of one option may affect the other. So it's quite obvious. Opportunities that are cost free or low cost that don't require any extensive feasibility study or that are relatively easy to implement should be implemented immediately. So opportunities that are obviously infeasible or cannot be implemented
options for further study. So, example of information recorded for identified options, problem type is here, and problem description is here, and then cleaner options are here. Then we have this option in which we will be talking about. So this is the phase of evaluation and feasibility study. इसमें जो चीज़ हमने पहले असेसमेंट की जो हमारी फेज थी उसमें जो हमने अपॉर्चुनिटीज़ को फाइनलाइज किया है उसको अब हमें इवेलुएट करना है. So the opportunities selected during the assessment phase uh, should all be evaluated according to their technical, economic and environmental merits. So this is the target of this phase. इसमें आपने जो है वो टेक्निकल वैल्यूएशन भी करनी है, इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन भी करनी है, इकोनॉमिक वैल्यूएशन भी करनी है, और इट विल डिपेंड कि आप इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो डेप्थ है, कितनी डिटेल में आपको जो चाहिए. इट विल डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट कितना वैल्यूएबल है, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ स्टडी. प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन है, इसमें हमारे पास easiest method जो है to different options is to form a group consisting of the project team and management personnel and discuss the possible solutions one by one. So ये तो through discussion आपने achieve करना है. This process should give a good indication of which projects are feasible and what further information is required. Then we have some technical evaluation. उसमें है कि हमारे पास जो उसके कंजम्पशन रेट्स हैं और बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन वो क्या है. मेन रॉ मटेरियल इन सॉलिड वेस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा इतना आ रहा है, अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें इस को जो कि सजेस्ट की गई है तो हाउ मच इट विल बी गिविंग अस. सो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 0 टन्स पर ईयर आ रही है. तो रेजिन फ्यूम्स जो हैं वो कितने जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इतने हैं एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इतने हैं. एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो रिड्यूस हो रही है. रिजेक्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पहले इतने थे और फिर इतना लॉस है. सो जो लॉस है वो भी रिड्यूस हो रहा है. सो ट्रांसपोर्ट थी वो रिड्यूस्ड फॉर मेन रॉ मटेरियल्स as it is lighter and less bulky. So ये वो स्टडी है जो कि टेक्निकली हम कंडक्ट करते हैं. इसमें आप देखें कि जो पॉसिबिलिटी है, जो हमारे मेन पैरामीटर्स बन रहे हैं वो हमने इन्वेस्टिगेट किए कि एट दिस मोमेंट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन उनकी कितनी जो है वो प्रोडक्शन है या उनकी कितनी कॉस्ट आ रही है. एंड अगर हम अपनी जो प्रपोज्ड चेंज है, प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बाद हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है. दिस इज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ तक उसको अचीव कर सकें. सो दिस इज फॉर वन ऑफ द ऑप्शंस. इसी तरह से जो दूसरी ऑप्शंस हैं उनको भी आप देखिएगा एंड देन वी विल कंपेयर द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन जिसको हम अडॉप्ट करने जाएंगे. देन इकोनॉमिक एवेल्युएशन जो है वो भी हम करेंगे. ऑफ कोर्स कॉस्ट इज वन ऑफ द मेजर फीचर्स ऑफ आवर सी. select viable options. के लिए evaluation criteria again reduced hazardous waste treatment, weight and score. इसको देखें आपने जो है वो ग्रेडिंग की फॉर्म में एक्सप्रेस किया and then we can easily compare the options. This is the evaluation checklist. इसको आप देख लीजिए. We need to understand overall cleaner production assessment check.
इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी, लाइक are the opportunities implemented according to the action plan, and then new procedures being followed correctly by the employees, where do the problem occurs and why, do licenses or permits require amendments, which ones. So ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएशन का हिस्सा है. एंड देन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस चेक जो है वो हमने जैसे पहले देखा उसी तरह से हैज़ द emissions decreased, total amount of waste and emissions decreased, as the toxicity of the waste and emissions decreased, and then energy consumption decreased, have the production goal been achieved or not. So ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने evaluation की checklist के through identify करनी है. And then this is documentation check. So statements of the company's objective, आप देख लीजिए इसको, just go through करें. And then this is the implementation and continuation phase. The objective of the last phase of the assessment is to ensure that the selected options are implemented and the resulting reduction in resources and waste generation are monitored. इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, दूसरी उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि क्या जो हमने पहले सजेशंस दी थी, जो हमने टारगेट्स बताए थे कि हमने इस लेवल तक इसको रिड्यूस करना है, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना है, एमिशंस को कंट्रोल करना है, एफ्लुएंट को रिड्यूस करना है, सो ऑल वेदर वी आर अचीविंग द रिक्वायर्ड गोल्स और नॉट. सो वी नीड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग. और एंड देन इसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, आप अगर देखें तो प्रिपेयर अ implementation plan. So activities to be carried, the way in which the activities are to be carried, resource requirements, persons responsible. तो implementation के लिए again आपको plan है तैयार करना होगा उसको implement करने. तो availability of resources है उसमें, फिर उसमें जो पर्सनस रिस्पॉन्सिबल हैं उनको एक्टिविटीज़ हैंड ओवर करना, टाइम फ्रेम जो है ऑफ कंप्लीशन जो है वो डिफाइन करना, implemented selected options. And then as for other investment projects, the implementation of cleaner production option involves modification to operating procedures and may require new equipment. So उसके लिए जो भी required equipment है वो भी available होना चाहिए. So all these things are a part of the planning of the implementation. So monitor performance. It is very important to evaluate the effectiveness of the implemented cleaner production option. So the typical indicators are a reduction in waste, reduction in resource, and improved profitability. There should be periodic monitoring, कि हमने पहले बात की है. So this is again the checklist. Well, that's all. Thank you very much for today's lecture. बाकी ये है कि आपको बुक जो है वो फॉरवर्ड करूँगा, उसके थ्रू आप इसको थॉरोली जो है वो इस चैप्टर को गो थ्रू कीजिए, ताकि जो चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं हो सकी वो आप जो है अपनी बाय योर सेल्फ आप उसको थ्रू दैट चैप्टर गो थ्रू कर लीजिए. एंड बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें हमने तकरीबन सारी जो असेसमेंट की मेथोडोलॉजी थी उसको. So thank you for your attention.